हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लास्ट मिनट सजेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट MCO 23। एंड एज यू नो दैट MCO 06 और MCO 07 मेरे जो सजेशंस थे उसमें से नियरली अबाउट 90% प्लस एग्जाम्स में कॉमन क्वेश्चंस थे। सो आई एम रियली वेरी वेरी थैंकफुल टू गॉड एंड लेट्स होप कि आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में काफ़ी सारे कॉमन क्वेश्चंस मिलेंगे दिस टाइम। सो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक्चुअली इट्स अ स्मॉल चैप्टर, ओनली 13 यूनिट्स आर देयर and let's see from unit 1 what topics that you should study. You should know about what is this strategy and what are the important features of strategy, जिसको हम लोग बोल सकते हैं मिंचबर्ग 5 P's। ओके, एंड ये जो 5 P's हैं, these are all the 5 P's like pattern, plan, position, perspective and ploy। तो इस ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है एंड इनफैक्ट क्वेश्चन आपको लाइक बेसिकली डायरेक्टली नहीं होके इनडायरेक्टली भी मिल सकता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिंग होनी चाहिए, बिकॉज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में ऐसे बहुत सारे टेक्निकल कॉन्सेप्ट हैं। सो एंड वन थिंग मोर कि इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो वेरी सिमिलर, मतलब इट इज़ वेरी हार्ड टू फाइंड द डिफरेंस इन बिटवीन देम। So you have to be very very particular, okay? And then we have like this concept, what is strategic management and what are the important features of strategic management. So this question also you should revise. This difference is very common one, the difference between strategy and policy एंड अगेन स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स। ये क्वेश्चन एक्चुअली जब ये चैप्टर जब ये पर्टिकुलर यूनिट MBA में था मैनेजमेंट में, तो यहाँ से बहुत ये कुछ एकदम ही मतलब कॉमन टॉपिक्स हैं। एंड उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी। तो जैसे कि यहाँ पे ये 3 लेवल हैं, एक तो कॉरपोरेट लेवल, देन वी हैव बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल। सो ऑल दीज डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी and their importance and their characteristics, so that should be revised for this exam. Okay, then one more important question from this unit, that is on SBU, strategic business units, and what are these SBUs and its important features, examples। सो ये क्वेश्चन आप यूनिट 1 से कर सकते हैं। यूनिट 2 से बात करते हैं, स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क पे है। एंड यहाँ पे फ्रेमवर्क में जैसे व्हाट इज स्ट्रैटेजिक इंटेंट एंड व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ इंटेंट। तो ऑल दिस 4 इंटेंट्स कंपोनेंट्स आर देयर, विजन, कोर वैल्यूज, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। एंड इनफैक्ट आपको शॉर्ट नोट से भी इसमें से कोई भी एक से मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम। ओके, आगे देखते हैं the next one, that is what is strategic analysis and what are the important components of strategic analysis. So this question also you can revise from unit 2. Unit 3 की बात करते हैं, strategy in global context, and here like what are the different processes of environmental analysis। जैसे कि यहाँ पे ये 4 processes हैं, like factor identification, factor selection, then variable analysis and strategic positioning। So all these factors needs to be explained। Then this is one of the most important question for this December exam, pestle analysis। And as we know, this pestle stands for political, economic, social, technological, legal and environmental factors। And what are the different steps involved in this pestle analysis? What are the different factors that influence pestle analysis? So pestle analysis के ऊपर whatever is there in your syllabus, please revise that properly। Then the next question is how a firm enters into global market। So these 4 are the ways which are there in your syllabus। The first one is direct exporting, then we have licensing, third joint venture and direct investment। So all these points needs to be expanded and properly explained। Okay, then we have EPRG framework. You can get a short note on this also। EPRG stands for ethnocentric,
then polycentric, regiocentric and geocentric. So this is an important approach, a very important question for the exam. ओके, यूनिट 4 की बात करते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। नाउ यहाँ पे इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन मॉडल, IOM, एंड इसके इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस। सो दिस क्वेश्चन शुड बी पेड अटेंशन। Then you can get a short note on external factor evaluation matrix, that is EFE. This is again a very important question for the exam. And what are the different steps involved in this matrix? So these 5 steps are there. So इनको बहुत अच्छे से आपको expand करना है for the exam. ओके, यूनिट 5 में चलते हैं, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, एंड यहाँ पे ये पोर्टर्स 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क। दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम, एंड आई एम डैम श्योर के लाइक यू कैन, दिस क्वेश्चन कैरीज अ लॉट ऑफ वेटेज, एंड the different types of competitive forces, as we can see here, 5 types. So all these points needs to be expanded properly. Then we have the concept of competitive intelligence. What is competitive intelligence? Then what is scenario planning? ये आपको short notes में मिल सकते हैं. And a short note on social media competitive analysis. This is again like important question for short note. Then again for CPM, competitive profile matrix. This question is also very important, and the important steps or processes involved in this matrix. Okay, so आगे चलते हैं next question में, unit 6 internal analysis, and यहाँ पे this different types of resources. ये question भी बहुत common question है, काफ़ी टाइम previous years एग्जाम्स में आया हुआ है मैनेजमेंट में. So these different type of resources like available resources, threshold resources, unique resources, and core resources. Then again, these resources are divided into subdivisions, subgroups. So all these things need to be understood properly. One more question that just now we left out, that is VRIO framework. Now this is again a very important question. You just can't skip this. V for valuable, R for rare, I for inimitable, and fourth for organize. So these 4 framework as far as the resources are concerned. So that is important. Then we have one more important question, a short note on the value chain framework. This also should be revised for the exam. यूनिट 7 में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज पे है. You should know what is differentiation, why it is important, and what are the advantages and disadvantages of differentiation. One more thing, the next question is focus strategy. ये भी मैनेजमेंट में काफ़ी टाइम ये क्वेश्चन एग्जाम्स में स्ट्राइक किया है. सो दिस क्वेश्चन ऑल्सो शुड बी रिवाइज्ड along with its different processes. Then its advantages, disadvantages, and unit 8 में देखते हैं competitive strategy. यहाँ पे you should know what is competitive strategy, its framework, and then we have dimensions of competitive strategy, the different dimensions. Then we have one short note from this unit, that is declining industries, that is sick industries. So यहाँ से आपको short note मिल सकता है. Then what are the determinants or factors that impact the declining industry? Then important question, unit 9 में देखते हैं कुछ important question corporate level strategy में, and यहाँ पे different types of corporate level strategies, जैसे कि यहाँ पे 4 टाइप के strategies दिए हुए हैं आपके बुक में. So these strategies needs to be explained. Then we have the next one, concept of diversification and how a firm can diversify, like what are the different ways of diversification, this question. So इस question को भी आपको revise करना चाहिए for the exam. And then again we have a short note on retrenchment strategy, and इसके ऊपर आपको short note मिल सकता है. ये 3 टाइप की होती हैं, turnaround, survival and liquidation. So these things needs to be explained. देन आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं. यूनिट 10 से इम्प्लीमेंटेशन पे है, एंड यहाँ पे लीडरशिप के ऊपर है बेसिकली जो आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं.
कि लीडरशिप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स, जैसे कि यहाँ पे ये 3 टाइप के स्टाइल्स है लीडरशिप, एंड हाउ द आई मीन द क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव लीडर, ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। इसके बाद में इस यूनिट में आपको मिल सकते हैं क्वेश्चन कॉरपोरेट कल्चर के ऊपर, एंड इसके मेन इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट, and this one, how a leader can develop a corporate culture or techniques of developing corporate culture. So this question is important for the exam. So इस क्वेश्चन को भी रिवाइज करें बिल्कुल एग्जाम्स के लिए। देन चलते हैं यूनिट 11 में, कॉरपोरेट गवर्नेंस। व्हाट इज कॉरपोरेट गवर्नेंस, व्हाट आर द 5 पिलर्स ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस। इसके मेन 5 पिलर्स एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन: accountability, second fairness, third transparency, fourth integrity, and fifth social responsibility. So this needs to be explained properly for 20 marks question. Then the different models of corporate governance. बहुत सारी कंट्रीज़ में अलग अलग गवर्नमेंट आई मीन कॉरपोरेट गवर्नेंस के मॉडल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे ये कैनेडियन मॉडल, देन यूके एंड अमेरिकन मॉडल, जर्मन मॉडल है, इटालियन मॉडल, फ्रांस मॉडल, जापानीज मॉडल एंड इंडियन मॉडल। तो ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है, एंड अच्छा क्वेश्चन है, नाइस क्वेश्चन। ओके, देन द डिफरेंट चैलेंजेस ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस. So issues, I mean, the different the different types of hindrances that we generally see in corporate governance. Unit 12 is on control, like controlling process, the different methods or techniques of operational control, and these 3 types of control should be revised, like financial control, time control, and MOB, management by objectives. So ये 3 techniques of strategic control should be revised for the exam. कुछ और है यहाँ पे इस यूनिट से जो आपको करने चाहिए, दैट इज़ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. हाउ विल यू क्लासीफाई दिस परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड? अगेन 3 types. And what are the common problems attached with controlling system, and different types of strategic control. ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको करने चाहिए. Then one difference that you can work out from here: operational control and strategic control. So this difference is important. Last unit, evaluation, यहाँ से आपको करने चाहिए this one, BCG growth share matrix, one of the very important question. शॉर्ट नोट्स में तो मिलता ही मिलता है ये क्वेश्चन बहुत बार. सॉरी. देन वी हैव लिमिटेशंस ऑफ BCG मैट्रिक्स. सो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पे जो आपको करने चाहिए फॉर दिस एग्जाम.